Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خصوصا سلام على حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أتباعه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, as you can see on the screen, इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का his journey, he was born in Medina tul Munawwara. Can anyone come and have a pointer here? He was born in Medina tul Munawwara, lived in Medina tul Munawwara, and accompanied Mansoor or anyone come and have a point so that I can point at something. ये कर दे ताकि वो मैं नजर आ सके. Okay, mashallah. Now you can see. Yeah. So here we are in Madinatul Munawwara. Then he traveled to Makkatul Mukarramah. In this month of Muharram, he traveled to Makkatul Mukarramah, and there he invited people like me and you who were there, hundreds and thousands of people. तो वहाँ हजारों लोग थे, but for the truth, very few accompanied him. So we shouldn't be surprised that Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala said, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورِ, that amongst the people there are only few, there's a minority who are thankful really. But anyway, from Medina Sharif he went to Makkah Sharif. He invited people like you went on the street. We invited people. Then he went to here, Karbala. From Karbala is a place in Iraq. From there, his journey, even after his martyrdom, his journey continued in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, this was the blessed desire of Ahlul Bayt and Sahaba Ikram Rizwan Ajmain, कि उनकी ख्वाहिश थी कि हम जिंदा हों तो अल्लाह की राह में सफ़र करें, और जब हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल जाए फिर भी हम जो है हमारी जिस्म जो है वो अल्लाह की राह में सफ़र करें. Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu, who was one of the hosts of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was in his 90s, आप 90 साल की उम्र में थे. Expedition was going to Europe. क्या आप तसव्वुर कर, हम बड़ा मार का मारा नॉर्वे आ गए, डेनमार्क आ गए, 50-60.
1400 years ago. Expedition is going to the center of Europe. The power at that time, Rome was the center of power. Constantinople was the center of power. Traveling on horses and camel, घोड़ों और इस तरह सफर. 90 साल का बूढ़ा है, 90 साल के बुजुर्ग हैं. The young people like you are sitting now, they said, Uncle, you do not need to go now. We are here, we can give the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. नौजवानों ने कहा कि हजरत आप 90 साल की उम्र है, आप ना जाएं, हम तो जा रहे हैं. We are going to Europe and we will deliver the message. He said, why would you not take? They said, you will die in the way. It's a very long journey. So he said that, well, that's what I want, because when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came here in Medina, once he stood up on the mimbar of Masjid Nabwi. Hazur alayhi salam Masjid Nabwi के मिंबर पर खड़े होकर रोने लग पड़े. आपके आंसू बहना. He was crying and tears were flowing on his beard. Now the Sahaba Ikram Rizwanullah alayhim ajma'in, they were very, very sad. They were very, very sad to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam crying, because they loved him more than anything and anyone. So they said, Hazrat Abu Ayyub Ansari and others, they said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, may our parents be sacrificed, our wealth and everything. What can we do to relieve you? Why are you crying? Why are you sad? हज़रत अबू अयूब अंसारी और दूसरे सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों परेशान, क्यों रो रहे हैं? He said that I am thinking about the ummah which is yet to come. I have delivered the message to you in spite of difficulties, in spite of only few people in the beginning followed me, in spite of people were throwing stones at me. But I'm thinking about the ummah to come, who will deliver the message to them. आपने फरमाया मैंने तो पत्थरों की बारिश, पत्थर भूख काट के भी, तलवारों के साये में भी तुम तक पैगाम पहुंचाया है. मैं इसलिए रो रहा हूं कि इस इखलास के साथ ये मेरे बाद में जो उम्मत आने वाली है उनको पैगाम कौन पहुंचाएगा. अल्लाह, वो तो पैसे मांगेंगे. जैसे आप जान रहते हैं हाउ एक्चुअली पीपल आर डूइंग, वी आर डूइंग विद द दीन फॉर एवरीथिंग, दैट इफ यू pay us, then actually we will deliver. If you don't, we are not interested in you. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was worried that he said, La as'alukum alayhi mala, la as'alukum alayhi ajra, illa al-mawaddata fil qurba. He said, I don't ask money from you, any kind of assistance or help from you, nothing. Only respect and honor my Ahlul Bayt. Why? आपने फरमाया कि मैं तुमसे ना पैसा ना माल, nothing I ask from you, just honoring and respecting Ahlul Bayt, my family. सवाल है क्यों? वो जो हस्ती पैसा नहीं मांग रही, ये नहीं कह रही कि मुझे ये दो, वो क्यों फरमा रहे हैं ये मेरे अहले बैत का अदब करना? इसलिए कि वो अदब हम ना किया तो उनका अदब नहीं होगा, या उनका मुकाम व मर्तबा बढ़ जाएगा हमारे अदब करने से. ये
नुक्ता सईदना अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियों ने बयान किया है वो ये नहीं है, इट्स नॉट दैट दे वांट टू बी ऑनर्ड और रिस्पेक्टेड, बिकॉज ही न्यू दैट दे विल ओनली प्रिजर्व the teachings of deen, truly they will understand, and through them the ummah will actually benefit. तो ये जो फरमाया इल्ला अल-मुवद्दता फिल कुर्बा, ये नहीं कि भाई उनको इज्जत एहतराम के भाई वैसे भाई सिर्फ करने के लिए, ये वजह उसकी ये थी कि आपको इल्म था कि दीन की असल शक्ल इन्हीं के पास महफूज रहेगी, अगर उम्मत इनके साथ रही तो बच जाएगी, ना रही तो वो तबाह हो जाएगी। ये नुक्ता है मुवद्दता फिल कुर्बा का। वरना कहाँ वो कहते हैं क्या पिद्दी का शोरबा मेरे आपसे इज्जत करने, इसलिए फॉर दैट रीजन अल्लाह ऑलरेडी गेव देम द ऑनर इन दुनिया। वो शक दूर करने के लिए अल्लाह पाक ने पहले ही बता ये जन्नत का शहजादा है, ये जन्नत की शहजादी है, ये वो हस्ती, ताकि किसी को ये शक है कि हमारे दैट फॉर अस कि हमारे कोई इज्जत के हमारे कोई ये कोई मोहताज है या कोई ऐसी चीज़ है। नो, because they, Prophet ﷺ knew they will have the true teachings of deen. उनके पास दीन की असल तालीमात होगी, बाकी गड़बड़ हो गए। And that happened in the time of actually Yazid as well. So Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu said, and other Sahaba, Ya Rasulullah, we will leave Medina, we will leave our children to convey your message. Please don't cry, don't worry, we will leave everything and convey your message to the four corners of the world. सहाबा इकराम हज़रत अबू अय्यूब ने फरमाया हमने नबी अलैहिस्सलाम से वादा किया हुआ है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फिक्र ना करें, आप रोएं ना, हम ये शहर भी छोड़ देंगे, हर चीज़ छोड़ दे, आपका पैगाम आपकी उम्मत तक पहुँचाएंगे, इसलिए मैं ज़रूर जाऊँगा। और अगर मैं मर गया, इफ़ आई डाई इन द वे, कैरी माई बॉडी, माई डेड बॉडी to your destination, don't bury it in the way, दफन ना कर देना जहां मैं मरूं, मंजिल पर लेकर जाना, so that on the day of judgment, ताकि क़यामत के दिन I can say to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when I was living I was conveying your message, and when I died my body was traveling to convey your message. कि जब तक मैं जिंदा था मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत इताअत का पैगाम देता रहा, और जब मेरी रूह जुदा हो गई मेरा जिस्म भी आपके पैगाम में और दीन के पैगाम को फैलाने के लिए गया। That is why today those of you who have visited Turkey, they go to and visit and they see the mazar of Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu in Turkey. That was the center of Europe at that time, center of power. हम तो पाउंडों के लिए, करोनों के लिए, डॉलरों के लिए आए हुए हैं, इल्ला माशाल्लाह जो लोग कोई तालीम के लिए भी चलो आते हैं, कोई दावत तबलीग के लिए भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो है अपनी बात कर रहा हूँ, those people came to you, वो भी आए इधर, they came but they came for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. So it is a great honor to travel in for the deen, for the sake of Allah. हमने तो सिर्फ पैसे और डॉलरों की ज़बान समझते हैं, कभी अल्लाह के लिए कुछ दे के, कुछ सफ़र करके बंदा देखे कि अल्लाह आपके बातिन को क्या देता है, आपको क्या देता है, वो चक्का ही नहीं। हम तो सिर्फ हर चीज़ को पैसों पे हम नापते हैं, कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे देंगे, क्या खाएंगे। दिस इज़ ऑल। डिड सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, आप मुझे बता दें, आप सारी ज़िंदगी होगी आपको भी करबला का वाक़या सुनते हुए। When the Kufa people wrote to इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, क्या इमाम हुसैन ने उनको ख़त में ये लिखा कि आप मेरी रहाइश का और मुझे कितने पैसे, मुझे कितनी तनख्वाह या तकरीर के कितने पैसे देंगे मैं जो आ रहा हूँ आपके लिए? कभी आपने सुना? Did you ever hear that he demanded anything from dunya, even food from them?
Except that he said, I have everything. I'm coming for just to your betterment and reformation and islah. एक अन्ना फूटी कोड़ी आपने नहीं मांगी किसी से. Although he was leaving his country, his children are there, everything is there. बच्चे भी हैं, बीवी भी है, बीवियां भी हैं, सारे हैं. लेकिन आपने कोई, he didn't demand anything. तो दीन का काम ऐसे होता है. Not that we are always thinking about it. Anyway, coming back to that map, ये नक्शा आपको जो दिखा रहा हूँ, ये देखें. Here, look. Here his head, his blessed head traveled from Karbala to Syria. His blessed head traveling from Karbala to Syria. He didn't bow down to evil. Yazid was representing evil at that time. He didn't bow down. Even when his head was severed, still his head was not bowing down. It was on the tip of the spear, high up. ना जिंदगी में आपका सर झुका और ना मौत के बाद, शहादत के बाद झुका, फिर भी वो नेज़ों के ऊपर सर मुबारक जो है वो था. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑनर्ड. एनीवे, आप देख रहे हैं सीरिया में जब आप आए तो करबला एंड सीरिया. आफ्टर दैट ही वेंट टू हिज ओन कंट्री एंड ओन मुल्क. फिर जहां के वो शहजादे थे वहां अपने मुल्क में वापस चले गए. इस मट्टी पर रहने वालों ने जन्नत के शहजादे की कदर ना की. वो चंद साल के लिए इधर आए और वो अपने मुल्क, he came from a kingdom of heaven, and these people, us people, could not appreciate and went back actually to his own kingdom. वो अपने घर वापस चले गए. Thing was, he was very generous. आप बहुत सखी थे. He wanted to take us with him in paradise as well. बात सिर्फ इतनी थी कि आप सखी थे, आप हमें भी उन जन्नतों में ले जाना चाहते थे, अपने मुल्क में, अपने घर में ले जाना चाहते थे. लेकिन हम ना समझ सके, हम उस दुनिया के मट्टी के साथ चिमटे रहे, उधर रह गए. But he went. But after all, he left the message, the formula of success for us. आप तो चले गए लेकिन वो फार्मूला है ना सक्सेस का, वो आप छोड़ गए. He left that so that anyone who can follow and he will be successful. So some of the things from that I would like to share. तो उसके मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें, वो जो आप हदायत और फार्मूला छोड़ गए कि किस तरह कामयाब होना है. चलो मैं तो चला गया लेकिन वो दूसरों के लिए छोड़ गए. उसके बारे में थोड़ी सी बात सुन लें. Look here, ये सुने क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में कि इंसान की 3 पैदाइशें, 3 births. Human beings have how many births? 3. हमें ये भी नहीं पता, हमें पता ही नहीं अपना जहाँ से, कोई पता नहीं कहाँ से आए हैं, कोई पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं. Now you will learn 3 births. One is physical birth. एक ज़ाहरी पैदाइश होती इंसान की. Then it's intellectual birth, अकली पैदाइश. वो बताते हैं आपको वो कब होती है. Third is spiritual birth, रूहानी पैदाइश. Now you can judge for yourself which life are you living. Are you still living at physical level? Are you still living at intellectual level? Or you are living at a spiritual level? अब ये हमारे सोचने की बात है. अभी जब मैं ख़त्म करूँगा आपने सोचना है क्या मैं सिर्फ जिस्मानी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या अकली ज़िंदगी भी, या कि एक रूहानी ज़िंदगी भी गुजार रहा हूँ. Let's discuss about physical birth.
जिस्मानी ज़िंदगी क्या है? Everyone is born. आप भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हो गया. Physical birth is shared with other creation. जिस्मानी ज़िंदगी दूसरी मखलूक को भी मिली, उनके साथ शेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या गाय नहीं खाती, बकरी नहीं खाती? ये फिजिकल है, दिस इज फिजिकल लाइफ. क्या वो खाते हैं? हम भी खाते हैं. सो दिस फिजिकल बर्थ, फिजिकल बॉडी इज शेयर्ड. तो अगर खाने में मुकाबला है तो गाय ज्यादा खा लेती है, भैंस ज्यादा खा लेती है. अ डंकी ईट्स मोर देन मी. इसमें मुकाबला करना है. Whilst in the spiritual and intellectual birth, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, for human being, he advised to leave 1/3 of stomach empty, 1/3 for food, 1/3 for drink. But many of us think, by all the time we are thinking about eating. Drinking, this is not a speciality of us. जानवर भी, वो भी यानी पीते हैं. वो हमसे अच्छा पीते हैं, वो अपने लिए हलाल पीते हैं, वो शराब नहीं पीते. कभी सुना आपने वो भी अल्कोहलिक हो गए हैं? ड्रिंक अल्कोहल नहीं, वो अल्लाह ने जो उनके लिए दिया वो अपना वो खा रहे हैं, पी रहे हैं. तीसरी चीज क्या करते हैं? फिजिकल बर्थ. व्हाट इज द साइन ऑफ फिजिकल बर्थ? स्लीप. सो इफ आई एम स्लीपिंग, देयर इज नॉट नो स्पेशलिटी देयर नाउ, बिकॉज इट्स ऑल फिजिकल. ये आपको बता रहा हूं, ये दिस इज फिजिकल बर्थ. द पाथ. फोर्थ, वर्क. We think working, brother, have you got a job? You're doing working. That's good, you should work. But that's not the purpose of life. काम करना है, काम ज़रूरत है, लेकिन मकसद ज़िंदगी नहीं है. Many people are crying and weeping now. All their life they have worked. Now they are sitting empty-handed. They are on pension. The children have left them. Their wife is not with them. Now they are thinking, what have they been doing? अब वो सोच रहे हमने क्या किया. सारी ज़िंदगी 70 साल तक काम करते रहे, बीवी छोड़ गई, बच्चे भी छोड़ गए, अब अकेले बैठे हैं, अब सोच रहे हमने क्या किया. What have they been doing? चूंटी भी काम करती है. Everything in the universe is working. So that's not the purpose. It's need, one should work, but that's not the end of ends. हम भी काम करें, अच्छी बात है, करना चाहिए, फारग नहीं रहना चाहिए. Then many of think we are very, very successful. हम business बड़ा successful कर रहे हैं. Look, honey bees, they do business. They collectively do something. They produce for others and even benefit the human beings. बड़ी अजीब बात नहीं कि जानवर हो के इंसानों को भी नफ़ा दे और हम इंसान हो के इंसानों को नफ़ा ना दें. हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है. That there are animals who are benefiting humanity, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं. And we as a human being, what we should do? We should be much higher. So business also. Marrying, ये बड़ा मार का मार लिया. हाँ मेरी शादी हो गई. लड़कियों के पीछे, लड़कों के पीछे. A person is always thinking about women and other things. That's a need. But also the other kingdoms, the animal kingdom, they also have their own system of reproduction and things, etc. So marrying also is we share with the actually animals. Having children, बच्चे, also they have children, we have children.
So that is why many people, they are crying, weeping. They don't have children. That's not the purpose of life, to have children. If you have good, Allah subhanahu wa ta'ala is testing. The real children are your good deeds, who are going to help you in the grave and also on the day of judgment, and also actually in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. The children here, Allah Azza wa Jal said, are fitna. They are a test for you actually to come. If you have good and well, except one wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no other his wife had children. In Madinatul Munawwara. And those also passed away whilst they were young. वो भी छोटी उम्र में पर्दा फरमा गए. हमारे यहाँ कोई इसको रोना लेकर बैठे, मेरे बच्चे नहीं है, जिसके है वो उसको औलाद है. ये मकसद नहीं है, बंदा बच्चे के लिए पैदा नहीं हुआ. But if you do, then obviously you will go away from the higher purpose. Bringing up children, बच्चों को पालना, हम दावत देते लोग, आओ अपनी असल ज़िंदगी जो जन्नत की ज़िंदगी है उसकी तरफ. ये बच्चों काम कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, तो बच्चे तो जानवर भी पाल रहे हैं, सिर्फ यही काम तो नहीं करना. Bringing up children, training and raising children, meaning training. Animals train their children to work, to actually do things. So if you also just do it, that's your life, build house, बहुत बड़ी माँ का मारा जी मैंने मकान ले लिया, वो भी हम का आधे का सूद का है, कोई किसी का किराए पे है, किसी का सारी ज़िंदगी आखिरी उम्र में जाके अपना होता है, उस वक़्त वो कब्र का हो जाता है, जो असल मकान में चला जाता है, दूसरा मकान फिर पीछे रह जाता है. The big problem that you've been paying all your life, and now you are 70, 65, today my house has become mine, but you have become now the graves, your real house. The house is left still back there. So the animals, they have, birds have their own. Anyway, sightseeing, holiday. ये देखें ना, जानवर भी holiday करते हैं, चिड़ियाँ, ये they also do holiday and things. Another one is fighting, लड़ाई. जानवरों का काम ये है, वो हर वक्त लड़ते रहते हैं. They fight as well. That's not actually an accident. Anyway, these are 12 things. ये कितनी हो गई? 12 चीजें. 12 things. So animal, other creation, they also do this. If a person, if human being is also doing these and think they are doing great, they have not risen above the physical birth. Animal level से वो ऊपर नहीं आया. जानदारों के दूसरे जानदारों से ऊपर नहीं आया. This is physical birth. Second, दूसरी कौन सी है? Now let's go on to the second one. अकली पैदाइश, intellectual birth. What is intellectual birth? कौन बताएगा कि बंदा अकली तौर पर कब पैदा होता है? When do you get intellectual birth? When is your second birth? Second birth is the day when you know why you were born, that is your second birth. जिस दिन आपको, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जिस दिन आपको पता चल गया मैं क्यों पैदा हुआ था, उस दिन आपकी अकली पैदाइश उस दिन हुई है, दूसरी पैदाइश उस दिन. बंदा असल में उस दिन पैदा हुआ है. Really you are born on that day when you know why you were born. पहले तो उससे तो 12 वो जानवरों वाली जिंदगी गुजार रहा है बंदा. So the day when a person realizes why they were born, how to achieve the purpose of existence, उस मकसद को मैंने हासिल कैसे करना है, his vision of life expands.
Many of you maybe are studying science. What does science say? They say there are three types of humanity. Science क्या कहती है? अभी आपकी साइंस का भी पता चल जाता है. That there are three types of humanity. Human progress is of three types. We have not, they say, the existing one, we have not even reached the first type progress. And there are three levels of human progression. यानी कहते हैं इंसान की तरक्की के जो है ना 3 दर्जे हैं. हम जो हैं अभी हमने वो we have not achieved the first one even, and there are 2 more. Who know about them? किसको पता है the 3 types of human progression and development? Anyone? चलें जी, अब आपकी स्कूल साइंस का, फिजिक्स का, whatever इम्तिहान हो गया है. Who can tell me? Any young man? That the human, like we have very technological advancement. देखिए ना, technology के तौर पर we have progressed very much. But they say that we have not even fully really developed to the first type of human being where human brain can reach. There are yet 2 other. Anyone just is aware of those 3 types? कोई है जो उन 3 का नाम ही बता दे? इंसानी तरक्की का जो ज़ाहिरी मादी तरक्की के 3 दर्जे हैं. Yes, anyone? Anyone knows? Put your hand up so we can listen. चले, ये तो फिर रिलीजन का, शहादत का, इमाम हुसैन के लेसन के बजाय साइंस का लेसन भी देना पड़ गया. Right, they say that the development, the progression of humanity, they judge by, they say that when human being can use totally all the energy of the sun, such advanced way that all the energy of the sun humanity can use because of their advance, then they will reach their first level of progression. Because now we are at a very low level. Some we are using solar power, little bit only to do things. There are electrical cars coming. But when you can use all the power, that we can use everything of the solar power and the whole power of the, you may say, the sun, then they say actually that's a sign of development. कहते हैं कि जब इंसान जब इस काबिल हो गया कि तमाम जितनी सूरज की जो तवानाई है, जब ये इस्तेमाल कर ले, इतनी टेक्नोलॉजी बना ले अपने लिए इस दुनिया में, तो ये इसका this will be one mark reached. Second, they say hold the energy in the solar system. Then they will reach the second level. The third, they say, is when whole the energy of galaxy of Milky Way is can. ये क्राइटेरिया बनाया हुआ है उन्होंने, साइंसदानों ने तरक्की का. हमें ना उसका पता, ना अपना पता, ना कोई चीज, और ये बस. So this intellectual birth, holistic vision of life. What is the holistic vision of life? Holistic vision कहते हैं कि सही पूरी तरह पता होना. चलो, scientists speak about science, we speak about what Allah subhanahu wa ta'ala mentioned. Now look at this picture here. This is a holistic vision. That's what Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala taught. The broader view. Yazid's view was only this life. Enjoy, do whatever you can to fulfill the pleasure of nafs, and that's it. That was the Yazidi vision. Yazid का जो
नुक्ता नज़र ज़िंदगी का था वो बड़ा तंग था, भाई यही ज़िंदगी है, मौज करो, मेला करो, जो रंग रलियाँ मनाओ, बस यही कुछ है। What was the vision of Sayyidina Imam Hussain? Now look here. ये देखें, Imam Hussein's vision was very broad. He, as he learned from his grandfather, Sayyidina Ali Karramallah Wajh al-Kareem, from Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, from his elder brother Sayyidina Imam Hassan Radiallahu Ta'ala Anhu. Firstly, there was nothing in existence. Then, inshallah, I'll go in detail about that. There was world of spirits which Allah subhanahu wa ta'ala created, our spirits, our arwah, they were there. That was the real me, the real you, where we were. There, Allah Jalla Majduhu gave them the option that, do you want to live with me forever? Do you want to rule forever? Do you want to be kings forever? Do you want enjoyment forever? We said, yes, we want. So here we are, here you and me, we've done a promise. वहाँ अल्लाह पाक से हमने, जब अल्लाह ने मानत पेश की, रबूबियत सारी अल्लाह पाक ने जन्नत दिखाई, दोज़खें दिखाई, बताया कि ये जाना चाहते हो उधर, हम सब ने कहा हाँ हम जाना चाहते हैं. Allah subhanahu wa ta'ala now is sending here this face of the earth. ये देखिए, ये छोटी सी दुनिया, a very small world, to test, in order to qualify for the greater life. उस हमेशा की जिंदगी का सर्टिफिकेट लेने के लिए इधर भेजा है. इसलिए नहीं इधर भेजा कि फिर चल के कबाब खा के, लड़कियों के पीछे भाग के, पैसे बना के, ये सारी चीज़ें इधर रह जानी हैं. All these things are going to just stay here on the face of the earth. None is going with us. Look at the people, other people, what they have done. So here we are, and this is vision of Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, that this life is temporal. Yazid's vision was only, you only live once. Bas ye hai. That was his, you only live once. That was his type of behavior. After that, so look here, short period of existence till death, and you are here. And normally I explain sometime to people to give them a little bit more insight that we averagely life expectancy of the world is 60, 70 years old. In some countries it's a little bit more, in some countries it's less. But once you live 60 or 70 years, 1/3 of it is just gone in resting and sleeping. It's as though you haven't existed. वो 60-70 साल में 20-25 साल तो सोने में गुजर जाते हैं. पहले 15 साल बचपन में, first 15 years in childhood, 35 to 40 तो ऐसे गुजर गए. Then about 15 years in work or education. 15 साल काम करते रहे, फैक्ट्री में, दुकानों पे बिजनेस करते रहे, काम कर करके बंदा या पढ़ता रहा या काम करता रहा. 15 ये 50 ये हो गए. 2-3 साल टॉयलेट और वॉशरूम में गुजार देता था. 2 or 3 years in washroom, in bathroom, in toilet. 4 years, about 4 years in problems, in difficulty. जब बंदा परेशान होता है, कभी बीमार हो गया, कभी कोरोना हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी whatever. There are difficulties as well in this life. 3-4 years like this. So really from 60 years, only a person lives 6 years. From 70 years, he lives 7 years. 10% बंदा रहता है. 60 साल वाला बंदा 6 साल जिंदगी गुजार के जाता है. 80 साल वाला बंदा 8 साल जिंदगी गुजार के जाता है.
दूसरे तो सोने में गुजर गए। मतलब जो 8 साल वाली ज़िंदगी है वो चलो भाई खाया पिया, कोई मज़ा उठाया, लुत्फ़ उठाया, वो ऐसी है। बाकी सोने में, काम करने में, मुश्किलों में, परेशानियों में गुजर गई। इट्स जस्ट लाइफ। सो लेट्स से इफ आई आस्क दिस brother, how old are you now? Sorry? 44. So in actual fact, he's only lived 4 years. Now if he thinks he's going to live 70, 80, good and well, but even if he lives up to 80, he only have about 3-4 years more. तो अगर अल्लाह पाक इनको बहुत लंबी ज़िंदगी दी, अगर मतलब 80 साल भी इनकी ज़िंदगी हुई तो ये फिर 3-4 साल और है बस, बाकी ऐसे ही चली जानी है। That was the message of Imam Hussain, and he realized this. He was almost at that time. So short life. आपको पता है, I was saying to the other day, UK and Japan, last year in Japan, they created a ministry of loneliness. एक वजारत उन्होंने नई बनाई है जिसको कहते हैं तन्हाई की वजारत, तन्हाई की, खलवतों की वजारत, वजीर खलवत, वजीर तन्हाई. And in UK as well. I don't know about Norway, maybe there is here as well. Why? They said that people, because of loneliness, तन्हाई की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा. इन जापान तन्हाई के जरिए वजह से, अकेला होने की वजह से वो खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, बहुत खुदकुशी. तो उन्होंने एक वजारत, दे हैव क्रिएटेड अ होल मिनिस्ट्री हु डील विद हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस. क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई, एवरीथिंग इज ऑन टेक्नोलॉजी, फोन, एवरीथिंग. यू वांट ग्रोसरी, इट्स कमिंग, you have metaverse there, you have Facebook there, you have everything. So all is robots working. You go on petrol station, no human being. You go on a shop, no human being. You go in a factory, no human being. It's all digital and cyber, no human contact. तो वो बंदे अब खुदकुशियां करने शुरू हो गए. पहले बंदे बड़ा शौक होता है, मैं ये टेक्नोलॉजी है, मैं लोगों के साथ लैदा रहूं, लोगों से लैदा रहूं. अब पता चला है कनाडा में भी, जापान में भी खुदकुशियां, जो बंदे केले, those people now are actually committing suicide because of loneliness, because they don't have connection to anyone. रिश्तेदारी ख़त्म कर दिया, दोस्तियां ख़त्म, रिश्तेदारियां ख़त्म, family system is finished, and now actually they end up doing that. For that concern, they had now created a ministry of loan. अब उन्होंने वजारत बनवाई है ताकि कैसे भाई इनको और engage किया जाए, लोगों के साथ मिले. So it's a great blessing. Those of you who have families, those of you who have some friends who are making time. Otherwise in the home ऐसे ही होना है जैसे माँ बाप बैठे हैं, मैं अपना फ़ोन लेके, आप अपना फ़ोन लेके बैठे हैं, वो अपना फ़ोन. We are just actually lost in our gadgets, being close and being far away. And then ठीक है, आप कहते हैं जी मुझे I want to do this, but once you are left to your phone and technology, you end up doing suicide, because actually you need that contact, that relationship. ये चीज़ें खुशी नहीं दे सकती बंदे को. Or why? Another reason is they are mostly atheist people. वो खुदा को ही नहीं मानने वाले बहुत सारे उनमें से, ये भी वजह होती है. Muslims, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alayhi, he was asked that you stay alone for hours and hours, don't you get bored? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया, आप अकेले रहते हैं, इतनी लंबी तन्हाई आपकी होती है कई घंटों, तो क्या आपको वहशत नहीं होती, आप बोर नहीं होते? You don't get bored?
आपने फरमाया कैफा तवहशु व माइया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व माइया अल्लाह सुब्हानहु व तआला. He said, how can I get bored? Allah is with me. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is with me. Angels are there. उन्होंने फरमाया मैं कैसे बोर हूँ, मुझे वहशत क्यों हो, मेरे साथ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं अल्लाह से बातें करता हूँ. So the problem now many of the European and Japanese facing, nor they have connection with Allah, और टेक्नोलॉजी ने मखलूक से भी कनेक्शन काट लिया, तब खुदकुशी नहीं करेंगे और क्या करेंगे. So this is reality of this life. So Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu mentioned that this is temporal life. After that you go into barzakh. Barzakh is the world, the life of grave. This is another life. You are born into another world. Your spirit, your रूह travels to another world. ये जो रूह है ये फिर बरज़ख में चली जाती है. उसके बाद फिर क़यामत का दिन होगा. There will be day of judgment, where every one will be given justice. There will be fadl of Allah, and there will be adl of Allah. There will be justice of Allah subhanahu wa ta'ala. No. For everyone and everything. And fifthly and lastly, the life forever in paradise, or actually the life of torture and punishment and painful. So when a person is intellectually born, जब अकली पैदाइश हो जाती है तो your vision, holistic vision actually you have of life. Then you can make good decisions about this because your world view changes. You never become depressed. सैयदना इमाम हुसैन को क्यों नहीं डिप्रेशन हुआ, क्यों एंग्जाइटी नहीं हुई? हमारा बिल ज़्यादा आ जाए तो डिप्रेशन है, कोई बीमारी आ जाए तो हम परेशान हैं. And in front of him all his children and brothers are being butchered, but we don't find that he said, oh, I am very depressed. Yes, he was upset. He was saddened that they were being harmed, and he was also concerned about the people of the Yazidi people as well, that they are also harming themselves. But to the last moment, he was happy in the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala jalla wala, because he knew this is all temporal. Everything is going to come back. आप क्यों परेशान नहीं हुए? परेशानी थी तो आपको दूसरों की थी कि ये इनके साथ क्या होगा, ये जहन्नम में जाएंगे. इसलिए कि आपको इल्म था कि हम तो अभी जा रहे हैं असल मुल्क और असल जहानों की तरफ और असल ज़िंदगी जो अल्लाह पाक ने दी है. So this is the holistic vision. So it's one-way journey. One-way journey. So when a person intellectually, you have balance come in your life. You're not always on the phone, you're not always outside, you're not always sitting with, there is a balance. Spiritual life, you have physical life, you have social life, you have recreational life, a balance comes in life, then actually you get the real peace and sukoon. Okay, now we go to the spiritual birth. अब तीसरी जो पैदाइश है वो रूहानी. ये कब होती है? When are you spiritually born? Physically, when it is your date of birth. You know your date of birth. Angels have also written mine and your date of death in advance. हमें तो अपनी तारीख पैदाइश का पता है ना. फरिश्तों को उन्हें भी लिखा, अल्लाह पर लिखाया, मौत की तारीख भी पहले लिख. बल्कि अभी इंसान पैदा भी नहीं हुआ, मौत की तारीख पहले उसके फरिश्ते लिख लेते हैं.
माँ के पेट में ही होता है वो. When the spirit is placed in the body, जब रूह बंदे के जिस्म में माँ के पेट के अंदर, तो अल्लाह पाक से फरिश्ता पूछता है, या अल्लाह इसने कितना जिंदा रहना, यानी अभी वो पैदा भी नहीं हुआ, मौत की तारीख पहले, अभी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता उसको कि कौन सी तारीख, when he will be born, but the date of death is known before. So spiritual birth happens when a person have achieved the purpose he was born for. Physical birth when you were born, intellectual birth when you know the purpose, and spiritual birth when you have achieved the purpose. जिस्मानी जिंदगी पैदाइश तो तब हो गई जब माँ बाप के जरिए आप दुनिया में तशरीफ लाए. अकली जिंदगी पैदाइश तब हुई जब आपको इस मकसद जिंदगी का पता चला, और रूहानी पैदाइश तब हुई जब आपने इस मकसद को हासिल कर लिया. Then actually you are living a spiritual life, enlightened life. What is the effect? ये देखिए, what is the effect? उसका असर क्या होता है, निशानी क्या है कि आप रूहानी तौर पर पैदा हो चुके हैं. You are living a spiritual life. उसकी निशानी क्या है? 3 निशानियां हैं. Your relationship with Allah becomes beautiful. Your relationship with yourself becomes beautiful. अपने साथ भी relationship you are beautiful. Because many a time we are lying to ourselves, we are not sincere to ourselves. हमारा अंदर कह रहा होता है ये ना करो अपने साथ, we are doing it, so we are not even sincere to ourselves. Beautiful relationship with the creation of Allah. मखलूक के साथ एक खूबसूरत ताल्लुक, ये 3 चीज़ें, अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अपने साथ खूबसूरत ताल्लुक, अच्छा ताल्लुक, और मखलूक के साथ, ये इलामात हैं. These are signs that you are spiritually born. So now Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. This is hayat tayyiba, spiritual life, रूहानी जिंदगी, इसी को hayat tayyiba यानी कहते हैं. So now, inshallah, because the time of Maghrib is approaching, we want to give you the opportunity of question and answer. So I will just slightly skip some of the slides, but show you the way how to begin your journey, how to achieve your journey. If you want to know more detail, inshallah, the brothers can sit with you. कुछ अभी हिस्सा रहता है, वो बाद में कभी बयान करेंगे, inshallah, after. But one last part I will begin. So we will skip the other one and inshallah just give you the last how to begin the journey. So we are going to, ये सारा जो है, the other one we will inshallah keep it on, please. This. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's see. Bismillah. हाँ, ये पे रदीम लगा दे फिर माशाल्लाह. Okay. Okay. Sure. I'll see if it is on from here. MashaAllah. So you know about that now. So now here you are seeing just an example. I have a lot of money, but a person cannot take money with him. This is, you are seeing
is personal. That's how me and you. There was one janaza, funeral prayer was going. You know, janaza, funeral prayer, someone was being taken. Imam Hassan Basri, someone asked Imam Hassan Basri, whose janaza is this? Who is this person? He said, yours. Imam Hassan Basri फरमाया, ये आपका तुम्हारा जनाजा है. He was surprised and he said, oh, how can it be? It's not. He said, then it's mine. Meaning, this is a message for you. That person has gone, but that's how our time is coming. This is your real home. Here we live in temporal, and this is your real bed. But it can change once actually you follow. So how to begin your journey? सफ़र शुरू कैसे करना है? Look at this. इस diagram को देख लें. Allah subhanahu wa ta'ala has given you a beautiful heart. That heart is attached with the tongue. Tongue is a channel, inroad to the heart. How you use your tongue, how you use your speech, either it brings darkness or light in the heart. यही सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात जो उन्होंने एक किताब में लिखी हैं, रिसाले में, he talks about these things, Risalatul Haqooq, and in that he talks about the tongue and the rights of the tongue. Just correcting this solves more than 50% of the problems of person. लोगों के जितने झगड़े फसादात उसमें 50% से भी ज़्यादा सिर्फ ज़ुबान की वजह से है. ये ठीक हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं. अल्लाह सुब्हानहु व तआला said in the Quran, قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Next one is ears, कान. What do you hear? किस तरह की चीज़ें सुनते हैं आप? Next one is eyes. Eyes are the camera. Eyes जो है ये कैमरा है आपके लिए. देखें ना, आपने किस तरह के फोटो सेव किए हुए हैं टेलीफोन में, आप खोल के देखें. You always want good photos in your phone. You don't actually save bad photos. देखें ना, अपने फ़ोन में भी लोग क्या करते रहते हैं, जी हमें जी अच्छी तस्वीरें चाहिए, बुरी तस्वीरें हमने नहीं सेव करनी, ये अच्छी तस्वीर नहीं है. But what about this camera and the store which is your brain? What type of things are you storing there? The images. वहाँ भी एक album है. There is an album there where you save everything. So be careful. With every blink of an eye, there is a slide which goes in. There is a picture which is saved. Hands, हाथ किस तरह इस्तेमाल करते हैं? Yazid said to Imam Hussein, give me your hand for bay'ah. But he said, no, this is sinful because you are representing evils. I cannot submit to evil. तो दुनिया में ऐसा तो होता है कि लोग सर बचाने के लिए हाथ कटा देते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि हाथ बचाने के लिए सर कटा दिया गया. Many a times it happens, a person will save his head, but his hand is cut. But here, in the case of Imam Hussein, to save his hand, he let his head actually be severed. Private parts of the body, बंदों की जो शर्मगाह है, ये किस तरह बंदा इस्तेमाल करे. इसको अल्लाह ने इज्जत के साथ देखे ना मुतल्लक किया हुआ है, पाकी के साथ. जो बंदा खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहा, दूसरे कौन उसकी इज्जत करेगा? If you are not honoring yourself. सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी शहादत ज़िलहिज्जा में हुई, said that all my life since I did bay'ah with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I have not even seen my own private parts with my eyes.
आपने फरमाया कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की है, मैंने कभी अपनी शर्मगाह की तरफ भी नज़र नहीं की। उस हाथ से कभी किसी गलत चीज़ को हाथ नहीं लगाया जिसने बैत की है नबी अलैहिस्सलाम जिस हाथ ने। Anyway, stomach. What is your earning? Where is your earning and risk coming from? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बंदा जमा कर खर्च नहीं कर रहा. He's not spending, accumulating, and this will go to waste. Or if it is unlawful way. Feet, which type of places you visit. So how, if you want to be successful in this life and the other life, you have to begin this journey. How you can do it? An easy way. You will be given by brothers here, ye sathi aapko denge. We can take one by one. We can firstly train the tongue. हम पहले ज़ुबान की इस्लाह कर लेते हैं. You will be taught a method how to do it. For example, every day you pray firstly 2 rakat salatul tawbah and learn about the sins of the tongue, and every day you try to abstain from it, and you put a tick there, 1, 2, 3, and complete 30. 30 din pure. If you cannot do, you only can do 3 days, you do 3 and start again. Next time maybe you can do 10. Then one day you can, once you hit the 30 mark, it becomes easier for you to abstain from it. Then you'll be trained in a positive manner how to use the tongue. Similarly, eyes, फिर आँखों का, जहाँ जहाँ मसला है, ये तो एक स्कैन है, जहाँ जहाँ. So once your 7 organs, 7 जिस्म के हिस्से जब पाक हो जाएंगे, you will become a blessing for your family, for your neighbor, for your relatives, for the community, for the country, for the world. जब बंदे के 7 अज़ा गुनाहों से, जराइम से पाक हो गए, वो तो एक बंदा एक बरकत और रहमत बन जाएगा अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, for his wife, for his neighbor, पड़ोसियों के लिए, सब के लिए, मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए. So whoever wants to learn and take is free of charge. You can, alhamdulillah, sit after and we can. And also, we'll teach you some dhikr of the dhikr, the best formula of dhikr, La ilaha illallah, how to do it also will be taught. And also, how to focus on Allah subhanahu wa ta'ala's name, because focus and print of something affects you. The pictures we see affect us, जिसको मुराकबा कहते हैं, deep thinking. So that can be taught to you anyway. But now I finish my discourse and give you opportunity firstly for question and also for who wants to begin this journey. And one brother, inshallah, English speaking brother, or we can get help from the Norwegian brothers as well. Inshallah, you will be taught, because we are not giving lecture only. हम lecture नहीं आपको देना चाहते, तरीका भी सिखाना चाहते हैं आप कैसे फिर अपना अल्लाह की राह पे, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते पे, how a person can actually walk on that path. कोई बात पूछनी है, सवाल करना है सीखने के लिए. बहस तो देखे मैं करता ही नहीं किसी से. I don't argue. I think there are many others are more knowledgeable than myself. दूसरों के पास ज़्यादा इल्म है, तो हाँ कुछ बातों का मुझे पता है, वो मैं बता देता हूँ कोई पूछे तो. So inshallah you are welcome to question. This is your opportunity now. If you want to ask any question, especially related to the topic, then raise your hand and you will have opportunity to ask. So while you're thinking about this, how many people actually want to know more and start this journey? Just raise your hand. Nobody wants to go to Jannah? No. This is a path to Jannah. They are brothers, mashallah.
Is that question or the? No, they want to know. So after that, 4 or 5 brothers these can be sit separately, and inshallah we can sit. I am here as well until Maghrib, but before that, we send some sawab, some special prayer reward to Sayyidina Imam Hussain by doing some little zikr and dua. तो ये मोहम्मद को बुला लें आप बेटा if you can do a 10 minutes nasheed dhikr and then we'll do dua. आपने तो नहीं कुछ फरमाना हाँ ये ले लो you can hold it in hand हाँ थोड़ा हाँ जिक्र करा दे फिर मैं फिर दुआ कर दूँगा. So now we can all participate, and after this nasheed dhikr, we'll do dua, and then we'll sit with those brothers who put their hands up, inshallah, for a short while. So now everyone can participate. We can also recite with him, or inshallah. حبيبك خير الخلق
تعلم كيف حالي وبما طاح قلبي من هموم واسترار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله أستغفر الله استغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم وأتوب
وعلى آله وأصحابه. सब आप दुआ फरमाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इख़बातल मुख़बितीन व इख़लासल मूक़िनीन वल मुराफ़क़तल अबरार व इस्तिहक़ाक़ हक़ाइक़ल ईमान वल्गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल लज़ी युबल्लिगुना इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्ब अहलिल बैत व हुब्बल हुसैन या अरहमर राहिमीन। Ya Rabbal Alameen, by your fadl and rahmah, accept our this gathering, and Ya Arhamar Rahimin, the gathering and the people who have come here for your remembrance and listening to your holy book and the holy household of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and their life and teachings. Ya Rabbal Alameen, bless us with the goodness of this world and the goodness of Akhirah. Enable us to live by Islam, die with Iman, resurrected with the pious and the righteous. Ya Rabbal Alameen, Ya Arhamar Rahimin, have mercy upon us, all the Muslim men and women, children, young and old, especially our parents and our forefathers up to Sayyidina Adam alayhi salam. Whoever have passed away with Iman, forgive them, Ya Arhamar Rahimin. Whoever is living, bless them. Whoever is yet to come, bless them and guide them and forgive them, Ya Rabbal Alameen. Ya Arhamar Rahimin, we request you to send the reward of all of this majlis and the dhikr and everything which right here have been said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to all Anbiya ikram alayhim assalam, Ahlul Bayt ikram, Sahaba ikram, especially Sayyidina Imam Hussein and Shuhada Karbala and their followers until the day of judgment. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jazakumullah ahsan. Bahut shukriya. So as we said that inshallah we are here till Maghrib, and those people who put their hand up, they can inshallah in a corner sit and thing. So those brothers who want to learn more, they raise their hands to go to the bottom of the mosque, left-hand side. ये वो मोहम्मद को बुलाना, वो जाना तो माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आप इतनी देर आप समा खराशी को क्या कहते हैं, इसके लिए भी दुआ करें। ये आप नाम का कह रहे थे, इसका नाम ही इसके नाम पे रखा हुआ है, नाम करो दुआ क्या